गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो हम पहले सब टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेट हम कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं जो कि है एमपी लैट्स। तो आपको याद होगा हमने अप्रैल 2020 में डिस्कस किया था कि एमपी लैट्स जो है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था। और उसका जो पैसा था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया था, क्योंकि हम कोरोना वायरस की जो है लॉकडाउन में थे, पैंडमिक से डील कर रहे थे, तो सरकार को पैसे की ज़रूरत थी। तो सरकार ने जो एमपी लैड्स है उसको कुछ टाइम के लिए, इनिशियल तो प्लान था कि 2 साल के लिए सस्पेंड करेंगे, बट अब 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही गवर्नमेंट ने अभी ये प्लान किया है, यूनियन कैबिनेट ने, कि इस स्कीम को, क्योंकि अब हम इकोनॉमिक रिकवरी में आ चुके हैं और असेट्स बनाने की ज़रूरत है, तो इस स्कीम को रीस्टोर किया जा रहा है 2 साल के एंड होने पहले से पहले ही। ठीक है, तो अभी वैसे प्लान तो ये था कि मार्च 2022 तक ये सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन इसको नवंबर में ही जो है, मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही जो है वो ऑलरेडी हम इसको रीस्टोर कर रहे हैं। और ये अब इसको अप्रूवल जो है वो 2025 से लेकर 26 तक दे दिया गया है। ठीक है, तो एम पी लैड स्कीम है क्या, ये देखते हैं। तो 1993 में एक गवर्नमेंट स्कीम थी जो एम पी लैड, इसको जो है अप्रूवल दिया गया। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा दे रही है। इम्प्लीमेंट भी इसको कैसे किया जाता है, एम पी के थ्रू। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको 5 करोड़ रुपए हर साल के मिलते हैं, और वो अपने हिसाब से इसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपने डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। अब इसमें कंडीशन ये है कि 15% जो एम पी लैड्स का फंड मिलता है वो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, और 7.5% जो फंड मिलता है, मतलब इस 5 करोड़ का जो है वो एस टी पॉपुलेशन के एरिया की डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। ठीक है, फिर 75 लाख रुपए जो है वो ट्रस्ट और सोसाइटीज़ की जो है असेट्स बनाने के लिए भी दिए जाते हैं इसी 5 करोड़ के अंदर। ठीक है, अब इसमें वर्क कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। जो लोकसभा के मेंबर है वो अपनी ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएंगे उस पैसे को। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं वो अपनी जिस स्टेट से वो इलेक्ट होके आ रहे हैं वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं वर्क्स को। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कंट्री में कहीं पर भी जो है इसको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये पैसा कहाँ पर वो लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती थी, लेकिन इसको है अब जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज। तो हमारी जो है गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज को इनिशिएट किया है पोषण अभियान को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि 75 विलेजेस के अंदर, 75 विलेजेस के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन विमेन इन एग्रीकल्चर ये चलाया जाएगा। मतलब कि जो है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा इनको, और 75 ऐसे विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा जहाँ पर ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब इन सेंटर्स के थ्रू क्या किया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस जनरेट की जाएगी कि न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन दी जाएगी, बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की जाएगी इन रूरल एरियाज़ में। तो अभी एक तरह से आप ये सोच सकते हो कि ये पायलट स्कीम है, हम 75 विलेजेस में इसको चला रहे हैं और 12 स्टेट्स में, ताकि अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये अगर सक्सेसफुल होगी तो इसको हम ऑल इंडिया लेवल पर भी चलाएंगे। ठीक है, फार्म सेक्टर में जो वीमेन इंक्लूडिंग जो है इन्वॉल्व हैं, स्कूल चिल्ड्रन हैं, उन सबको जो है हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम माल न्यूट्रिशन से लड़ सकें। और न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर मतलब कि जो न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स हैं उनको हम ज़्यादा जो है वो रूरल एरियाज़ में प्रमोट करने के लिए कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर उसकी की जाए, उसकी जो है खेती की जाए। तो हम उनको जो है मोटिवेट करेंगे कि वो ऐसे ही क्रॉप्स को उगाएं जो कि न्यूट्रिशन जो है वो रिच है। ठीक है, फिर जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे, और खासकर विमेन फार्मर्स, जो विमेन फार्मर्स हैं उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में भी बताया जाएगा इसी प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जनजातीय गौरव दिवस। तो यूनियन कैबिनेट ने भी डिसाइड किया है कि हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया करेंगे, क्योंकि जिन जिन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है उन सबको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे आपको रिवोल्ट पता होंगे, ट्राइबल रिवोल्ट, जैसे संथल्स का, तमर का, कोल, भील, खासी, मीज़ो, इन सब के बहुत सारे और भी ट्राइब्स हैं। इन सब ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था। तो हम इन सब के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं 15 नवंबर को। 15 नवंबर को हम क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है श्री भगवान बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी जो है, जिनको हम भगवान भी कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उनकी कम्युनिटी के मुंडा ट्राइब के लोग उनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। उन्होंने उलगुलन चलाया था, उलगुलन मतलब रिवोल्ट किया था ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ। तो हम जो है
इस दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन जो है सारे ट्राइबल जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी देखते हैं। 1875 में इनका बर्थ हुआ। इनको धरती अब्बा भी कहा जाता था, मतलब अर्थ के फादर इनके जो है कम्युनिटी के लोग इनको कहते थे। इन्होंने उलगुलन उलगुलन किसको कहते हैं, रिवोल्ट, तो मुंडा रिबेलियन चलाने में इनका सबसे बड़ा रोल था। ये वहाँ उसके जो है लीडर थे। और जो है मासेस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि वो डेट पेमेंट जो है मनी लेंडर्स की बंद करते हैं और ब्रिटिश को टैक्स पे करना जो है वो बंद कर दें, क्योंकि वो अनफेयर था, ठीक है। उन्होंने 2 मिलिट्री यूनिट्स भी बनाई, एक तो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए और एक आर्म्ड स्ट्रगल के लिए, और एक थी प्रोपागेंडा। ये अब आप देखो कि उस समय के टाइम पर प्रोपागेंडा की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ये भगवान बिरसा मुंडा उस टाइम पर ट्राइबल्स होते हुए समझ गए कि ब्रिटिश हुकूमत, आपको पता है ना कि प्रोपागेंडा पर कितना खर्च करती थी, परसेप्शन मैनेजमेंट में कितना खर्च करती थी। उस टाइम पर बिरसा मुंडा जो है वो भी रियलाइज़ कर चुके थे कि मिलिट्री ऑफेंसिव से कहे जितना ही इम्पॉर्टेंट ये है प्रोपागेंडा भी। प्रोपागेंडा मतलब अपने आप मिलिट्री कैंपेन को लोगों में जस्टिफाई भी कर पाओ, आप लोगों को बता भी पाओ कि ये जो मिलिट्री कैंपेन हम चला रहे हैं, जो हम रिवोल्ट कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड है, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वरना अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना प्रोपागेंडा में सक्सेसफुल रही तो वो आपके खिलाफ आपके सारे लोगों को, आपके सारे लोगों को ही आपके खिलाफ कर देगी, या आपके देश के लोगों को आपके खिलाफ कर देगी और आपको जो है वो रिवोल्ट को दबा देगी, ठीक है। अब उन्हीं की एक्टिविटीज़ की वजह से, उन्हीं के सक्सेस की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिससे कि ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स के पास जाने पर रोक लगा दी गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने जो है हायर एथेनॉल प्राइस जो है वो उसको अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि अभी जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा चल रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा चलते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा कर पाएँ। उसी कोशिश को जो है मजबूत करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने एथेनॉल के प्राइसेस को ज़्यादा कर दिया है, ताकि क्या हो कि शुगर केन फार्मर्स जो हैं या शुगर मिल्स जो हैं वो इथेनॉल के लिए शुगर केन या केन जो है उसको अवेलेबल करा सकें, उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सकें, ताकि हम एथेनॉल जो है ब्लेंडिंग अपने फ्यूल में कर सकें, ठीक है। तो अब जैसे प्राइस ऑफ एथेनॉल जो सी हैवी मोलासेस हैं उसका भी बढ़ा दिया है, बी हैवी मोलासेस हैं उसका भी बढ़ा दिया गया है, शुगर केन जूस, शुगर सिरप जो है उसका भी बढ़ा दिया गया है। जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो भी पेबल कर दिए गए हैं कि जो शुगर मिल्स हैं उनको जो जीएसटी जो देंगे या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी कंपनसेट किए जाएंगे। ऑयल पीएससीज को जो है फ्रीडम दे दी गई है, ऑयल जो है आपकी कंपनीज हैं उनको फ्रीडम दे दी गई है कि जो 2G एथेनॉल, 2G एथेनॉल का होता है 2G बायोफ्यूल, मतलब सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, मतलब जो आपके नॉन फूड प्रोडक्ट से बनता है, जो जैसे आपका जो वुड से बनेगा, विस्क से बनेगा, जो आपके नॉन फूड आइटम्स है उससे जो हम एथेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं उसको हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। अभी आप याद रखो कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो है उससे अगर आप एथेनॉल बना रहे हो और उसकी जो ब्लेंडिंग कर रहे हो, तो जो उसका प्राइस है उस फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का, वो ऑलरेडी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो डिसाइड कर रही हैं। अब गवर्नमेंट ने ये भी इजाज़त दे दी है कि जो 2G बायोफ्यूल का यूज़ करके जो आप जो 2G बायोफ्यूल प्रोक्योर करोगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, उसकी भी फ्रीडम जो है ऑयल कंपनीज को दे दी गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस क्या होता है। तो ए मोलासिस जो होते हैं वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है। मतलब जब आप शुगर को या प्रोसेस करते हो तो जो फर्स्ट आपका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो ए मोलासिस होता है, ठीक है, फर्स्ट मोलासिस। इसके अंदर 80 से 85% ड्राई मैटर होता है, ठीक है। इसको हम स्टोर तो कर सकते हैं, अगर इसको स्टोर करना है तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन को रोक सकें, ठीक है। फिर बी मोलासिस क्या होते हैं, जिसमें जो आपका ड्राई मैटर का कंटेंट तो उतना ही है जितना ए वाले मोलासिस में होता है, लेकिन इसमें लेस शुगर का कंटेंट होगा और इसमें ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एक बेनिफिट है कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। फिर सी मोलासिस जो है वो फाइनल मोलासिस है, जब जब ये आपको बिल्कुल आपने सुखा दिया, आप इसकी जो एंड बाय प्रोडक्ट पे ले गए, आप इसको सारी इसमें से जो है जो आप शुगर को निकाल देते हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर रह जाती है, और 32 से लेके 42%, और ये क्रिस्टलाइज भी नहीं होता है, और इसको हम लिक्विड और ड्राई फॉर्म में जो है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो सी मोलासिस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसके थ्रू हम एथेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं। बी मोलासिस के थ्रू भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो ए मोलासिस है उसकी कमर्शियल वायबिलिटी उतनी नहीं है कि हम उससे जो है एथेनॉल बना सकें, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोर करना ही बड़ा मुश्किल है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है।
बी मोलासिस और सी मोलासिस के थ्रू हम एथेनॉल बना सकते हैं। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम हमारे इंडिया में कब शुरू हुआ? 2003 में शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं, और क्रूड ऑयल जो है वो अगर हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, तो हम इसमें कुछ ना कुछ जो है, ताकि हम कंबस्शन भी अच्छी कर सकें और हमारा पेट्रोल या फिर जो है आपका फ्यूल भी कम लगे, तो इसके लिए ना हम 5% जो है इसमें एथेनॉल डाला करेंगे पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, ये मिराज, मनमाद और बरेली में, उत्तर प्रदेश में। तो ये पायलट प्रोजेक्ट चलता रहा 2003 में, और 2006 तक हमने पूरी कंट्री में जो है वो ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है, अब उसके 2006 तक हमने पूरी कंट्री में 5% कर दिया इम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने जो है 10% का टारगेट रखा। 10% के टारगेट में हमने पूरे इंडिया में इसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और शुरू में हमने यूटीज़ ऑफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से हमारा टारगेट ये है कि हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2022 तक, ऑफ कोर्स 2019 में शुरू किया हमने टारगेट, और 2022 तक हम जो है 10% ब्लेंडिंग कर देंगे पूरे एथेनॉल की हम अपने पेट्रोल में, ठीक है। फिर अगला टारगेट हमारा क्या है? 20% एथेनॉल टारगेट, 20% ब्लेंडिंग का। तो एक्चुअली जो टारगेट था वो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 का था, लेकिन अभी रिसेंटली, अभी 1-2-3 महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ने इस टारगेट को भी प्रीपोन करके 2030 की बजाय इसको 2025 कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही एम्बिशियस हमारा प्रोग्राम है कि 2022 तक आप 10% ब्लेंडिंग का टारगेट रखे बैठे हो, और उसके अगले सिर्फ 3 साल के अंदर आप 20% जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाल रही है। हमने डिस्कस भी किया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली हैं, बेनिफिट्स दे रही हैं, तो ये सारे हमने डिस्कशंस किए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीईआरटी, आपको पता है ना एनसीईआरटी, उसके थ्रू एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करेंगी, और ये देखेगी कि क्लास 3rd 5th 8th और 10th के जो बच्चे हैं उनकी जो है एजुकेशन या उनकी जो है कॉम्पिटेंसीज कितनी डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2013 में इस प्रोग्राम को, इस सर्वे को किया गया था कि बच्चों की कैपेबिलिटीज़ जो ग्रेड 3 5th और जो है 8th क्लास में है उनकी कितनी डेवलप हुई है। तो उसको सबसे पहली बार 2017 में किया गया था, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर जाके सर्वे किया जाता है कि बच्चे कितना पढ़ लिख पा रहे हैं, कितनी उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हुई हैं। तो उसके बेसिस पर ये सर्वे जो है उसका वो अपना रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ASER एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये आपकी प्रथम एनजीओ निकालता है। तो आप ये समझ लो कि वो एनजीओ की एक रिपोर्ट होती है, ये आपकी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट होती है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की, ठीक है। तो उसमें भी हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखते हैं कंट्री में कैसे चल रही है, ये गवर्नमेंट देखती है अपनी तरफ से कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंट्री में कैसे चल रही है, ठीक है। तो जो आपका RTE एक्ट है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर सर्वे करना, उसकी जो है उसके ऊपर एक नज़र बना के रखना, ये एक उसका कंपोनेंट है। तो उसी को ही हम देखते हुए हम क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स जो है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हर क्लास में लैंग्वेजेस की स्टडी की जाती है कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू कैसे बच्चे जो है वो बोल पा रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, साइंस, सोशल साइंस जो है क्लास 1st से लेके 8th क्लास के बच्चे कितनी अच्छी तरह से इसको पढ़ पा रहे हैं या कितनी अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम ये सर्वे करते हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स जो है उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि हम स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में बच्चा जो है वो अगर अपने जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ पा रहा है सिर्फ तभी वो हम उसको पढ़ा लिखा मानेंगे। हम उसके लर्निंग आउटकम्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट करके उसको रिकॉग्नाइज़ करने की या उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आपको पता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम निक्सी कहते हैं, तो हमारा ये आपका जो .in, समझ लो कोई भी वेबसाइट होती है जिसके आगे .in होता है, जो आपका इंडिया का डोमेन है, वो यही नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उसको जो है वो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, वही आपको डोमेन देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने abcde.in लेना है डोमेन अपने इंटरनेट का, वेबसाइट का, तो आप नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के थ्रू ही वो डोमेन लोगे, ठीक है। तो अब ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपने ही डोमेन पर, मतलब जब ये आपको जो डोमेन बेचेंगे उसके लिए एक पेमेंट गेटवे तैयार कर दिया है, ठीक है, रियल टाइम पेमेंट्स के लिए, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली इनसे परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके। अभी तक ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो आप ऐसी वेबसाइट पर जाते थे जैसे कि godaddy.com या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन परचेज
परचेज़ करते थे, क्योंकि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया से आप परचेज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करने का मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन अब ये डिजिटल पेमेंट्स का मैकेनिज्म ले आए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हो। .in या इंडिया से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये निक्सी है क्या? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसको बनाया गया है, और ये इंडियन जो है हमारी डोमेन्स को देखती है। और एक्चुअली इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि अभी तक क्या होता था, मतलब जब तक ये नहीं बना था 2003 तक, इससे पहले क्या होता था कि आपका जो भी डोमेन है, जैसे आपको abcd.in या ये भी लेना हो अगर 2003 से पहले, तो क्या होता था कि यूएस बेस्ड सर्वर्स, यूएस में मोस्टली होते थे, आपके सारे इंटरनेट के जो है डोमेन्स जो है वहीं पर बनते हैं। तो क्या होता था कि हमारा जो आपका वेबसाइट्स हैं वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाती थी, क्योंकि क्या होता था, डेटा पहले जाएगा यूएस तक ब्रॉडबैंड का या इंटरनेट का, और वहाँ से फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा तब इंडिया तक आएगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको हम डोमेस्टिक कर देते हैं, कि हम जो अपने डोमेन्स हैं वो अपने पास ही रखेंगे, ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर दे सकें। उससे क्या होगा कि हमको अब्रॉड नहीं भेजना पड़ेगा अपना डेटा, आप इसी कंट्री के अंदर रह जाएगा, तो बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस होएगा। हम इंटरनेशनल अपनी बैंडविड्थ, जो इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है वो भी बचा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए निक्सी को बनाया गया, और ये अपने जो इंडिया से रिलेटेड डोमेन्स हैं वो अलॉट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is MP lads. So Union Cabinet has recently approved this MP lads, and rather it has restored this scheme. So it was earlier suspended in April 2020 owing to the impact of coronavirus lockdown and the rise in expenditure of the government. So the government decided that because we are having low income, we should suspend this scheme, and we should utilize the funds of this scheme for the benefits of people, for the expenditure that the government is incurring in the coronavirus time period. Okay, so that's why all these funds, all the MP lads funds, were transferred to the Ministry of Finance so that they can utilize it. Okay, so now after seeing that this coronavirus situation has improved, I would not say that it has gone away, but it has improved, and we have also entered into the economic recovery phase. So we can now afford to restart this scheme or restore this scheme. So that's why earlier the government planned that we will keep this scheme suspended for 2 years, but now it was initially planned that this scheme will remain suspended until 2022, that is March 31st 2022. But now the government has decided that we will prepone and we will restore this scheme before this March period, and now it has been restored much earlier before the target date, and this scheme has now been extended up to 2025 and 2026. So this MP-led scheme was originally launched in 1993. It's a central sector scheme. So for those who do not know, a central sector scheme is one in which the government of India provides funds, and the machinery of government of India also implements that scheme. Of course, this is not particularly it is not particularly a complete central sector scheme, because in this case even the state government machinery is also implementing the scheme. But in this generally a centrally sponsored scheme. A centrally sponsored scheme is that in which the government of India shares some part of the expenditure of that scheme, and the scheme is implemented by the state government machinery. Okay, so this is MP-LEDS is a central sector scheme in which the government of India is providing all the funds. That's why we are calling it central sector scheme. And based upon that, 5 crore rupees per MP is provided for the works in the constituency of that member of parliament. And there are certain conditions that 15% of these MP-LEDs funds should be utilized in areas inhabited by scheduled caste population. 7.5% of these funds should be utilized in areas inhabited by ST population. 75 lakhs must be utilized for building assets by trusts and societies. So there are also conditions that Lok Sabha members can recommend works only within their constituencies. Elected members of Rajya Sabha can recommend works within that state from which they have got elected, and the nominated members of both Rajya Sabha and Lok Sabha have the freedom. They can recommend works anywhere in the country. Okay, so what happens this under this MP-LEDs, the member of parliament recommends the
works to be done in the constituency to the district magistrate or the DC, that you may call it in another language. So this district magistrate on behalf of the MP implements this scheme and carries out the developmental works in the constituency of the member of parliament. Okay, so when this scheme was launched, it was administered by the Ministry of Rural Development, but now in the last few years it has been transferred to the Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, so now let us see the next topic, which is nutrition smart villages. So to commemorate the 75th of year of independence, the government of India has launched this nutrition smart villages village program. This is basically a pilot scheme in which the government is just testing the waters as to how this scheme will respond and how successful this scheme would be. That's why they have launched it in just 75 villages initially in 12 states of India. And this scheme will basically generate awareness about nutrition in such villages, and it will educate people. It will try to bring out a behavioral change in rural areas, and the focus will be on women who work in farm sector and for school children. Okay, so we have an issue of acute malnutrition, and that's why we will through this scheme the government wants to focus on improving awareness about nutrition sensitive agriculture. What does this mean? So about so this scheme wants to motivate farmers to go for crops which are nutritious. Okay, so mostly millets are those crops which are environmentally good also, as well as they are nutritionally good for humans also. Okay, so the government wants to push such crops, and they want to make people aware about the benefits of such crops, and through intensive awareness campaigns such activities will be undertaken, and women farmers will be remain the focus, because they are the fulcrum of this nutrition issue. If they are made aware, they have both the say in the farm field as well as at home, so they would be able to take care of nutritional needs of children the best as compared to male farmers. Okay, so now let us see the next topic, which is Janjatiya Gaurav Divas. The Union Cabinet has decided that every year on 15th November we will be celebrating this Janjatiya Gaurav Divas to which is delegated to the memory of our tribal freedom fighters. So these are the tribals. Several tribals participated in the revolt against British government and British rule. And why we have decided to celebrate this day, 15th November only, because this 15th November is the birth anniversary birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, and he led the Ulgulan. Ulgulan means revolt or revolution against the British colonial system. And you may have heard about several revolts also, like Santhals, Kols, Bhils, Khasis revolts, etc. So all these tribal communities who revolted against the British rule, we are going to pay our we are going to remember their sacrifices about the country. That's why we are going to celebrate this Janjatiya Gaurav Divas. Okay, so about Bhagwan Birsa Munda, he was born in 1875. He's often also referred to as Dharti Abba. Dharti Abba means father of the earth. Okay, so he led this revolt or Munda rebellion against the unfair rules that the British government imposed upon these tribesmen, and these debts or through this Munda rebellion, Bhagwan Birsa Munda organized masses so that the tribals stopped paying debts or interest to the moneylenders and the taxes which were unfair to the British. And the most important thing about this is that when he was leading this revolt, he created two military units. So the first one was, of course, about military training and armed struggle, but the second one was about propaganda. So the propaganda unit is very important here, because if you just launch a military offensive but you do not justify your military offensive, then the entire world would
team up against you and your offensive would be taken down. So he realized the importance of justifying your military offensive or revolt. That's why he created a propaganda unit, and he utilized this propaganda to create awareness among the masses or its own tribesmen that they are being cheated by these money lenders as well as the British government through the taxes. That's why he was able to garner support of all the people, of course his own tribesmen also, against this British rule, okay, or the moneylenders rule. That's why this revolt became successful, and he was able to get this Chota Nagpur Tenancy Act in 1908 passed, which restricted the passing of land from tribal people to non-tribals. Okay, so now let us see the next topic, which is ethanol blending. So recently Union Cabinet has decided that they would be giving higher prices to sugarcane based raw materials because we want to go for higher ethanol blending of petrol or fuel. Okay, so the price of ethanol from C heavy molasses has also been increased. B heavy molasses have also been increased. Even the GST and transportation charges that these sugar mills will be incurring, the government is also going to pay them back. And the government has also decided that the oil companies would be given the freedom to decide the prices of second generation biofuels through which ethanol is made. Okay, so this second generation is basically biofuels are those which are non-food items, like the peels of your fruits or wood or anything which you cannot eat, and you use it to create biofuels. So earlier the government has already allowed the oil marketing companies to you to decide the prices of grain based ethanol prices or to grain based fuels. So the grain based fuels are the first generation fuels. So now both the first generation biofuels and second generation biofuels, the oil marketing companies have the freedom to decide the prices of that. Okay, so for those who do not know about what is C heavy molasses or B heavy molasses, so basically these are just stages. Okay, how you process this sugar cane. So at the first process, first molasses, A molasses would be recovered. So it is basically an intermediate bioproduct. Whenever you process this sugar cane, this comes out to be the first intermediate bioproduct. It has sugar crystals, but it also has dry matter. 80 to 85% of dry matter is there. So actually we have to use this dry matter at the end to create this ethanol. Okay, so but there is a problem. We cannot store it because it will crystallize, and if it crystallizes it, we cannot we cannot make ethanol out of it. That's why it is not commercially viable as of yet to create ethanol from A molasses. From B and C molasses, so this is the next stage. The B molasses is the second molasses, which has the same DM content, but it contains less sugar as compared to the A molasses, and it does not crystallize also. That's why we can store it and we can produce ethanol from it. For C molasses, these are the final step. So this is final molasses. It contains it is the end byproduct of the processing in sugar factory. It also contains some sort of sucrose or sugar, but it is not as big as considerable as the ones in B and A stage. So it does not crystallize, and it can be converted in liquid and dry stage. That's why it is the most ideal form of commercial feed ingredient in the form of for producing this ethanol. Okay, so about this ethanol blended petrol program, it was launched in 2003, and the government decided that we want to save the environment as well as costs of our country, which we spend on fuels. That's why we would start blending ethanol in our fuel. Okay, so initially the pilot project was launched in three cities, Miraj, Manmad, and Bareilly in Uttar Pradesh. In these three locations, this project started in 2001, and by 2006 we achieved this 5% ethanol blended petrol in the country. And we after that we started the next process of 10% ethanol blending. But of course, just see, from 2006 it took almost 13 years for us to cover most of the country for 10% petrol blending. And
from 1st April 2019, we have set a target that we will achieve this 10% ethanol blending by the year 2022, and we have preponed the target of 20% blending from 2032 now 2025. So the speed at which we are working to make this a reality is unparalleled, and we are going to achieve this 10% next year and the 20% target by the year 2025. Okay, so about the next topic is National Achievement Survey. So this survey is conducted by NCRT. I'm sorry, I've failed to mention it here. I will mention it in your notes, of course. This NCRT conducts this survey, and this survey was started in 2017, and this survey basically is done to keep to analyze the competencies which have been developed by the children of certain grades, like this grade level 3, 5th and 8th. Of course, now the class 10 students have also been included in it. So we just want to see the quality of elementary education which is prevalent in the country. So a certain schools, a sample, basically a sample of certain schools is taken from all districts of India, and based upon that we make a this survey, we do this survey. So just imagine that you have this annual survey, annual school education report of Pratham NGO. So that same exercise is being done by the government through this National Achievement Survey, through which we just understand the quality of an elementary education which is imparted by in our schools in the country. So it has the mandate of RTE Act, Right to Education Act, which mandates that the central government can make rules to assess the quality of elementary education in the country. So class wise, subject wise learning outcomes are assessed based upon this based upon certain criterias. And apart from languages, we also see the learning outcomes in mathematics, environmental studies, and several other subjects. And we do not we do not keep a focus on English language alone, but we see that a student is able to learn its own education, or learn its lessons in in different languages like in Hindi, English, or Urdu. So the focus is not just on English language. Okay, so now let us see the next topic, which is National Internet Exchange of India. So this NIXI is a not-for-profit company, and earlier it was, of course, it sells the .in or the India domain to the public, to the people. And earlier it was not having any digital payment gateway of its own. So the people were using these private services providers like GoDaddy, etc., to purchase these domain, because you could not purchase this your domain from directly from NIXI, because it was not having any digital payment gateway. Now it has decided to have its own digital payment gateway. So NIXI will have its own original customers, and real time payments will be settled, and uninterrupted services will be provided by NIXI. Okay, so this NIXI is a not for profit organization. It was launched in 2003. So earlier, before this 2003, what was happening is that to purchase even the India related domains, we had the customers had to purchase it from US companies. Okay, so what was the issue with that? You just purchase a domain from a US based company, and it is wasting away a lot of broadband or internet strength or the bandwidth of the country. So just if you just establish a server here, or the service of selling this domain names in the country, you would be able to save so much amount of bandwidth in the country, because earlier every domain had to travel so much distance to US for even basic loading purposes. But now, after setting up this NIXI, we have at least gotten control over India related domains. Okay, so it is basically an Indian registry of internet names and numbers, and we have established this NIXI as a not for profit company. Okay, so you can just purchase a .in, like you can purchase a domain name abcd.in, or if of course if it's available or not. If it's available, then you can purchase it. So to save international bandwidth, we established our own internet exchange in India, and it's a not for profit company. And there was an issue, there was a
a complaint by customers that this Nixie was not having any digital payment gateway, so they had to rely on private companies. But now Nixie has also decided that they will have its own digital payment gateway, and now this will be having the customers would not have to use the services of a private company. Okay, they can directly purchase these domains from Nixie. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.